Yeah, hello students. How are you? I hope you all are well. Students, today we will learn chapter number 2, that is lines and angles. That is lines and angles. Now class, let's start the chapter. Look at these objects. Just see pizza, biscuits, bangles, mirror, globe, flag, dice, carrom board, ball, book. These are. Now class, these objects represent basic geometrical shapes. Class, ये हर एक shape क्या कर रही है? Represent कर रही है basic geometrical shapes, which are either 2D or 3D. Tell the basic shapes of these objects. Also, can you give some more example, real life examples of each of these basic shapes? Now class, introduction of geometry. Introduction to geometry. Look around yourself. We observe many geometrical structures like points, lines, rays, angles, triangles, quadrilaterals and circles in this chapter. हमने क्या किया? हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, लाइंस होते हैं, रेज होते हैं, एंगल्स होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं हमारे चारों तरफ. वो क्या होते हैं? मैनी स्ट्रक्चर्स होते हैं. किसके? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. नाउ क्लास, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न ओनली बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज ऑफ these geometrical structures, whether it is a dress or a table or huge office building. It is not possible to construct anything unless we have two things, the shape and the measurement. These two things form the basis of a branch of mathematics known as geometry. हम क्या कहते हैं class? Geometry. Geometry is an ancient branch of mathematics. Class, वो एक ancient branch of mathematics and the words comes from Greek वर्ड जोमेट्रॉन. किस वर्ड से लिया गया? इस वर्ड, जो किसका वर्ड है? ग्रीक का वर्ड है. वेयर जियो मीन्स अर्थ एंड मैट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. Understand? The concept of geometry play a vital role in the field of architecture, designing and engineering. Now class, basic geometrical terms. Plane. A plane is a flat surface that extends indefinitely in all directions. क्लास, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में indefinitely. It is a two-dimensional concept which has no height or no thickness. For example, surface of a whiteboard, tabletop, etc. Class, plane Q, PQRS, plane X, plane ABC. क्लास, हम उसको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. A plane can be represented either by a rectangle or a parallelogram in three different ways as shown in figure. Understand? Point. Now class, come on point. A point is represented by a dot. Class, point क्या होता है? एक dot होता है. It has no length, no breadth or no height. That is, it has no dimension. अब class, line segment. A line segment is a part of line bounded by two endpoints. Class, line के two endpoints होते हैं. एक line segment के two endpoints होते हैं. इट हैज अ फिक्स लेंथ. क्लास, एक फिक्स लेंथ होती है एक लाइन सेगमेंट की. अगर मैं बोलूं इसकी 4 सेंटीमीटर है तो वो क्या होगी? एक लाइन सेगमेंट है. या मैं आपसे बोलूं कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, दैट इज 2 सेंटीमीटर. ओके, एक फिक्स्ड उसका क्या होगा? मेजरमेंट होगा. एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू और पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट इज आल्सो वन डायमेंशनल, दैट इज it also has measurable length but no height or width. Come on, line. A line is made up of infinite numbers of points joined together on a straight path extended in both directions. A line has no ends, extend indefinitely in both directions. A line is one dimensional, that is, it has no measurable length, even no height or no width. ना तो उसकी कोई height होती है क्लास, ना कोई width होती है. A line that passes through 2 points A and B is denoted by, हम उसका क्लास ये साइन होता है लाइन का, और it can named by a single lower case letter L in C. AB or L is a line. Ray. Class, a beam of light coming from a torch in a dark hole can be compared to a ray. Class, एक यहाँ से निकलेगी. Okay? A ray is part of a line. क्या होता है? एक लाइन का पार्ट होता है. It has no end point but goes on indefinitely in other direction. The end point is also known as initial point.
रे ए बी इज डिनोटेड एज लाइक दिस। क्लास लाइन का क्या होता है, ये होता है, और रे का क्या होता है, ये होता है साइन। टाइप्स ऑफ लाइन्स क्लास, अब हम टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, two lines that meet each other at a common point are called intersecting lines. The point that is common to both lines is called points of intersection. Point of intersection क्लास सी, इनका क्या एक कॉमन पॉइंट है, मैं उसको ओ बना सकती हूँ। क्लास ये क्या हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। Now concurrent lines, three or more lines are said to be concurrent if they pass through a common point. The common point of construct line is called the point of concurrence. क्लास थ्री और मोर लाइन्स तभी कहेंगे जब उनका एक कॉमन पॉइंट होगा। वो कौन सी लाइन्स होंगी, कॉन्करेंट लाइन्स होंगी। नाउ क्लास पैरेलल लाइन्स, when two or more lines never meet after extended in either direction are these called parallel lines. Class में I can you see the example of parallel lines, AB and CD, they both are the parallel lines. वो कहीं भी intersect नहीं होती। Class perpendicular lines, two lines which intersect each other at an angle of 90 degree are called perpendicular lines. उसमें से क्लास क्या होगा, मीट होंगी वो एक अदर से, एक दूसरे से उनका क्या होगा, एक 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी वो। Come on exercise 2.1 question number 1, name the points shown in figure below class and join them in order. क्लास हम उसको ऐड कर सकते हैं और हम उन्हें एक कुछ भी नाम दे सकते हैं। You can see here. Okay, now come on question number 2, name the line segments in the adjoining figure. Line segment class, you can see here AB and AC are the line segments. Now come on question number 3, write the name of the lines in the given figures. Lines class, lines, there is line PR, line, now class QR, RS and SR, they all are lines. Now class question number 4, how many lines can passes through one point? Class infinity lines. कितनी भी हम लाइंस को एक पॉइंट से थ्रू कर सकते हैं, कितनी भी लाइन को हम पास कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? रेस्ट ऑफ द पार्ट डू योरसेल्फ। क्लास डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। क्लास मैंने आपको बताया था लाइन क्या होती है, हम उसको दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट एक सर्टेन क्या होती है, उसकी मेजरमेंट होता है, रे जिसे हम एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, now question number 6, look at the figure and name the line in the different ways. Class, you can say three different xy, yz and xz. Understand? Question number 7, draw rough figures and show the following. Point x lies on the line L. class, हम L line लिखेंगे, उसमें हम x को lie कर देंगे। Rest of the parts do yourself class. Again question number 8, draw the following. Point T on line M and point T. Understand? Rest of the parts do yourself. Come on question number 9, from the adjoining figure answer the following question. Write a pair of parallel lines. Class, parallel lines AB and CD. Yes class, two lines whose intersection is D. is D. class, ये है D, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वो, that is DR and you can see here CS or okay class. Rest of the parts do yourself. Come on question number 10, answer the following. Line containing point G. point G पर class E और F, lines that intersect at L. L पर intersect कर रही है, that is AB and CD. 2 points on line EF, that is G and H. Now class come on angle. An angle is a figure formed by two rays starting from the same initial point. Two common initial point is called the vertex. Class, ये हमारा क्या होता है, vertex होते हैं और ये हमारी arms होती हैं of the two rays which form the angles are two called its arms of sides. arms और sides हमें क्या बोलते हैं, हम उसको sides भी बोलते हैं और arms भी बोलते हैं। Now for example, in the figure above, 0
इज द वर्टेक्स एंड ओ एक्स और ओ वाई क्या है, ये हमारी आर्म्स है या फिर साइड्स है। नाउ क्लास लुक एट द फिगर, द एरिया विद इन द आर्म्स ऑफ एन एंगल प्रोड्यूस एंडलेसली इज कॉल्ड द इंटीरियर। क्लास ये हमारा क्या होता है, इंटीरियर पार्ट होता है। नाउ in the given figure, point xyz lies in the interior of PQR. The area outside the arms of the angle produced endlessly is called its exterior. In the given figure, point LMN lies in the exterior of angle ABC. Now class, the rays forming an angle are called its arms. वो क्या होती है, arms होती है। The points lying on the arms are said to lie on the boundary of the angle. In the given figure, point U and V are on the boundary of an angle U and V. क्लास क्या है, वो बाउंड्री पे है, उसके ऊपर है। Now class, measuring angles. Come on, measuring angles. To measure an angle, we measure the amount of rotation needed to go from one arm to another. Take two sticks and fix a screw as shown in the figure. Understand? Observe how the amount of rotation keeps on increasing, but for an accurate and exact measurement of an angle, we need an instrument called a protractor. Class? Yes, class. Observe the amount of rotation keeps on increasing, but for an accurate. क्लास हमें एक एक्यूरेट मेजरमेंट और एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए क्या होता है एंगल का, हमें किसकी जरूरत हो, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। Now class, protractor is an instrument which is used to measure the angle. Its shape is semicircular and has a center point O, a baseline, an outer scale and an inner scale. You can see here. A protractor are of two types, class, unlabeled protractor and labeled protractor. A protractor with no markings on it, वो क्या होता है क्लास, unlabeled. जिसमें markings होती है वो क्या होता है, label protractor होता है क्लास। Now in the label protractor, in the inner scale has graduation from 0 degree to 180 degree from right to left. From right to left. The outer scale has graduation from 0 degree to 180 degree from left to right. When the angle is opened up to right, we use the inner scale, and when the angle is opened up to the left, we use the outer scale. We call our measurement degree measure. One complete revolution is divided into 360 equal parts. Each part is called degree. Measuring angles using protractor to measure the angles, say angle ABC and angle XOY. We place the protractor on the given angles such that the center point of the protractor coincides with the vertex B and angle ABC of O of angle XOY. Of the angle baseline of the protractor coincides with one of the arm of the angle, say BC, OX. Read the angles corresponding to the second arm of the angles AB or OY. AB, OY. Plus 55 and it is 70 degree. Understand? Now class, comparing angles. To compare the angles, we can use two methods. Comparing by superimpositions, comparing by using protractor. Now class, comparing angles by superimposition, any two angles can be compared by placing them one over the other. That is by superimposition. While superimposing, the vertices of the angle must overlap. Class क्या होने चाहिए, एक दूसरे को overlap करनी चाहिए. After superimposition, it becomes clear which angle is smaller and which angle is larger. Class ये हमारे angles थे और मैंने एक दूसरे को overlap किया यहाँ पर. So angle PQR is greater than angle ABC. Understand? The picture shows the two angles superimposed. It is now clear that PQR is larger than angle ABC. However, comparison of angles by superimposition method sometimes is not accurate and every time consuming. So क्या क्लास, इससे क्या होता है, हमारा टाइम कंज्यूम होता है बहुत ज़्यादा. We need an accurate method to compare two angles. क्लास अब हम किसका यूज करेंगे, comparing angles by using protractor. Angle can be compared accurately
By using a protector as shown, look at the given angles. When we measure both angles, we find then that is 45 degree and it is 60 degree. तो क्लास अब हम इसको हमारे पास क्या हो गया, एग्जैक्ट मेजरमेंट हो गया और वो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, वो हमारे पास जल्दी से हम उसको मेजर कर सकते हैं. दैट इज 45 degrees less than 60 degree. Yes class, drawing angles. We can even draw angles with a protector. क्लास हम अपने प्रोटेक्टर से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं एंगल्स को. Let us draw an angle of 30 degree with the help of protractor. To draw an angle of 30 degree, we follow step as. Step 1, begin with the base and draw IN. Understand, पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे. Step 2, we will place the center point of the protector and on AN align IN to the baseline. To the baseline, class C. This is the baseline. Step 3, now starting point O, count your degrees up to 30 on the protractor, mark point T at the label 30 degree. Class C, count 30 degree, here is 30. तो हम क्या करेंगे, एक मार्क करेंगे, that is. So now step 4, using a ruler join the point IT. अब हम क्या करेंगे, उनको join कर देंगे. Now angle TIN 30 degree is required angle. You can see here. Now class, come on exercise 2.2. Question number 1, draw 3 angles and name them in different ways. क्लास अब आप कोई भी एंगल किसी भी मेजरमेंट का आप ले सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसको नेम दे सकते हैं. ओके, एंगल ABC, एंगल XYZ, एंगल PQRS, which one you want. Now give 3 examples of angle from your environment. अपने environment में कोई भी 3 examples आप यहाँ पर दे सकते हैं. Now question number 3, name the vertex and the arms of the following angles. क्लास ये क्या होता है हमारा vertex. So vertex is equal to B and arms is equal to AB and AC. Understand, rest of the parts do yourself. Come on, question number 4, name all the angles in the given figure. Class AXC, AXC. Now second angle is angle AXB. Understand? Now class, come on, question number 5, name the angles marked in the given figure. Again class, angles, that is now angle PQ. Now second angle is angle QTR, because दोनों का vertex क्या है class, T. Understand? Now come on, question number 7, in figure which of the following statements are false. Class, point C is in the interior of BOD. Interior of BOD, point C. Yes class, it is true. Point A is in the interior of BUC. No class, ये हमारा इंटीरियर नहीं है, तो false. Point E is in the exterior of DOC. Exterior नहीं class, ये interior है, false. Point B is in the interior of AOD. Point B, yes, that is interior. Point C in the exterior of the BOE. Of the BOE. No class, is false. Exterior नहीं, interior है. Now class, come on, question number 8. Measure the angle given below using the protractor and write down the measure. क्लास आप क्या करेंगे, अपने यहाँ पर एक प्रोटेक्टर रखेंगे, तो क्लास आपको इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं. तो 90 डिग्री का एंगल है. ओके क्लास, आप उसके प्रोटेक्टर को मेजर करेंगे, उसमें आप अपनी उनकी डिग्रीज को फिल कर देंगे, उनको मेजरमेंट यहाँ पर फिल कर देंगे, अपने प्रोटेक्टर को यहाँ से फिल करेंगे और उसकी डिग्री को यहाँ पर राइट कर देंगे. विच वन इज मेजरमेंट. ओके क्लास, इट इज 90 डिग्री एंड इसको आप फिल कर सकते हैं, दैट इज 120 डिग्री. ओके, आप इनको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन हियर. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9. मेजर द एंगल बिटवीन द हैंड्स of the clock in each figure. Class, it is 90 degree angle and it is 180 degree. Understand, rest of the parts do yourself. Yes class, come on, question number 10. Find the degree measurement of angle BXE. 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 Plus आप find कर सकते हैं, that is BXE, that is 65 degree. Now CXE. Now CXE, that is 95 degree. Rest of the parts do yourself. Class, अपने डिग्री को
देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर वो लाई कर रहा है, वही उसकी डिग्री होगी. ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डू योरसेल्फ. कम ऑन टाइप्स ऑफ एंगल्स. Now class, we can classify the angles according to their degree measures. The zero angle. An angle which measures zero is called as zero angle. You can see here. Now class, right angle जिसका measurement क्या होता है class 90 डिग्री होता है, वो हमारा क्या होता है right angle होता है. Now straight angle class जिसका measurement क्या होता है 180 डिग्री, वो हमारा होता है straight angle. You can see here. Now class, complete angle. Complete angle होता है 360 डिग्री का. You can see here. नाउ एक्यूट एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा बट 60 डिग्री से ज्यादा होगा, वो क्या होते हैं हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं क्लास. एन एंगल विच मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. 0 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 90 डिग्री से क्या होगा छोटा, वो क्या होते हैं हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं. नाउ क्लास ऑब्ट्यूज एंगल. एन एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं बट लेस देन किससे होता है 180 डिग्री से, वो कौन से एंगल्स होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स. नाउ क्लास रिफ्लेक्स एंगल्स एंड एंगल्स व्हिच मेजर्स ग्रेटर देन 180 डिग्री. 180 डिग्री से तो बड़े होते हैं बट लेस देन होता है 360 डिग्री से, वो कौन से एंगल्स होते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल्स. कम ऑन एक्सरसाइज 2.3. क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल. क्लास आप उसको मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड यहाँ पर उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको नाम देंगे, व्हाट इट इज राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल एंड सो ऑन. क्लास नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री. व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री. नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द एंगल्स whose magnitudes are given below. क्लास ये क्या है 76 डिग्री है, 0 डिग्री से तो ज्यादा है बट 90 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा एंगल हुआ, दैट इज एक्यूट एंगल. नाउ कम ऑन 215. क्लास ये 180 डिग्री से तो ज्यादा हुआ बट 360 से कम है, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डू योरसेल्फ. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4, use a protector to find the measurement of each triangle, then classify each angle as acute, obtuse, right और reflex. क्लास आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से उसको क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, देन उसको क्लासिफाई करेंगे कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूट है, राइट है और रिफ्लेक्स एंगल है. अंडरस्टैंड. नाउ क्लास कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks. Yes class, a straight angle equal to dash right angles. क्लास एक स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 2 राइट एंगल्स के बराबर होता है. नाउ द मेजरमेंट ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज क्या होता है क्लास, उसकी मेजरमेंट 360 डिग्री होती है. नाउ एन एंगल विच इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल. क्लास जो राइट एंगल से तो बड़ा होता है बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल, तो वो कौन सा एंगल होता है, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल. एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 259 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. नाउ एंगल A is 53 degree and angle B is 35 degree. So angle A is greater than angle B. Come on class, triangles. A triangle is a simple closed figure made up of 3 line segments. Class ये क्या होते हैं, simple closed figure है. Now 3 vertex होते हैं, 3 sides होती है, 3 angles है. class उसके classification of triangles. Classification. Now triangles can be classified into different types of the basis of their sides and angles. Class scalene triangles, isosceles triangles and equilateral triangles. Now class a triangle whose no sides are equal, कोई भी साइड उसकी इक्वल नहीं होती, वो कौन से scalene triangles होते हैं क्लास. Understand? There is 4, 5, 6. A triangle having all sides of different lengths is called a scalene triangle. Now isosceles triangles, a triangle whose any 2 sides are equal, जिसकी 2 sides क्या होती है, इक्वल होती है, वो isosceles triangles होते हैं क्लास. 3, 4, 4, 5. ना इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, उसकी तीनों साइड्स ही इक्वल होती हैं, वो क्या होती है, हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं क्लास. नाउ यस क्लास, acute angle triangle, right angle triangle, obtuse angle triangles. Now class acute angle triangle क्या होता है क्लास, the triangle in which all the angles are acute angles. सारे एंगल्स क्या हो, एक्यूट हो, लेस देन 90 डिग्री, वो कौन से एंगल्स होते हैं क्लास, वो कौन सा ट्राइंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल.
Now, right angle triangle or right triangle. A triangle whose one angle is a right angle. जिसका एक एंगल क्या होगा क्लास? राइट एंगल होगा, वो क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ क्लास obtuse angle, a triangle whose one length is obtuse. One length is obtuse more than 90 degree. वो क्या होंगे? obtuse angle triangle. Understand class? Come on, exercise 2.4. Question number 4. Yes class, classify each of these triangles on the basis of their sides as 4 centimeter 4 centimeter. Class ये दोनों sides क्या है? Equal. So it is isosceles triangle. Okay. Now यहाँ पर तीनों side ही different है. So it is scalene triangle. Of the parts to yourself. Come on, question number 2. Identify the types of triangles given below based on their angles. Class C. यहाँ पर सारे angles क्या है? Less than 90 degree. So it is acute angled triangle. Now class, you can see here, यहाँ पर सारे angles क्या है? Obtuse. So it is obtuse angled triangle. Understand class? Rest of the parts do yourself. Come on, question number 3. Match the following. Measurement of triangles, 3 sides of equal length, that is quadrilateral. 2 sides of equal length, that is isosceles triangles. All sides of distinct. की सारी sides अलग हो, that is scalene. 3 acute angles, 1 right angled, obtuse angle, that is obtuse angled, 1 right angle with 2 equal sides, that is isosceles right angles. Understand class? Now come on quadrilaterals. A quadrilateral is a simple closed figure made up of 4 line segments. Class 4 line segment होते हैं quadrilateral में. Now let us consider a quadrilateral PQRS. A quadrilateral PQRS has 4 vertices PQRS, 4 sides PQ, QR, RS and SP. 4 angles, see, angle PQR, angle QRS, angle PRSP, angle SPQ. 4 diagonals, that is PR and SQ or QS. Types of quadrilaterals. Class, there are different types of quadrilaterals with specific properties. The following flow chart shows the complete classification of quadrilaterals and their interrelationship. Quadrilaterals, class, parallelograms और नॉन पैरेललोग्राम्स. क्लास पैरेललोग्राम्स में रोम्बस होता है, रेक्टेंगल होता है और स्क्वायर होता है. अंडरस्टैंड? जिनकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं. नाउ क्लास ट्रेपीज्म एंड काइट नॉन पैरेललोग्राम्स में. नाउ ट्रेपीज a quadrilateral with one pair of parallel sides is called trapezium. One pair of parallel sides. In the given figure, ABCD is a trapezium in which AB is parallel DC. Understand? Now class kite. A quadrilateral in which 2 pairs of adjacent sides are equal is called a kite. 2 pair of adjacent sides. In the given figure, ABCD is a kite in which AB is equal to AD or BC is equal to CD. Understand? ये क्या हो गया हमारा kite. Now class parallelograms. A quadrilateral in which 2 pairs of opposite sides are parallel and equal is called a parallelogram. In the given figure, ABCD is parallelogram in which AB parallel क्या है? CD के और AB is equal to CD. BC किसके पैरेलल है? AD के and BC is equal to AD. Also diagonal of parallelogram bisects each other, that is OA is equal to OC and OB is equal to OD. Now rhombus class. A parallelogram in which all sides are equal is called a rhombus. In the given figure, ABCD is a rhombus in which AB parallel CD, AD parallel BC and AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. They all are equal. Also diagonal bisects each other at right angles. You can see here, that is angle DOA.
A is equal to 90 degree. Now class, rectangle, a parallelogram with all angles as right angle is called a rectangle. In the given figure, ABCD is a rectangle in which you can see here it is 90 degree. Also, diagonal of a rectangle are equal and bisects each other. AC is equal to BD, AO is equal to OC. AO, OC और ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी. Now class, come on, square, a rectangle with all sides equal is called a square. In the given figure ABCD, class ये क्या है, सारी साइड उसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल. Now also diagonal of a square are equal and bisects each other at right angle, that is 90 degree. Come on, exercise 2.5. Question number 1. Identify the following geometrical figures. Yes class, it is rectangle. इसको आइडेंटिफाई करना है. It is rectangle with height. Understand? Rest of the parts to yourself class. Question number 2. Complete the following table. Now class, rectangle हमें क्या करना है, opposite sides parallel equal. All are all sides equal? Opposite angle equal? Class हाँ, opposite sides क्या होती है, एक दूसरे के parallel होती हैं. Yes. Equal होती हैं. Yes. All sides of equal नहीं होती. Opposite angle equal. Opposite angle क्या होते हैं इक्वल के? यस, इक्वल होते हैं. डायगोनल और परपेंडिकुलर. यस क्लास, डायगोनल होते हैं, इक्वल होते हैं. ओके क्लास. नाउ स्टेट क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट ट्रू और फॉल्स. ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल. ईच एंगल of a rectangle is a right angle. Yes class, true. All sides of a rhombus are equal. Yes class, true. Rest of the parts do yourself. Now class, your chapter is completed. Prepare it very well and meet you in next class.